Hello everyone, how are you guys? I hope everyone is doing well. और बच्चों, so today we are going to do the second lecture of polynomials, right? Okay. And if you remember, in the last lecture we have learned what is the meaning of a polynomial, what is the degree of a polynomial, and we have also learned what is the meaning of terms of an expression, right? Okay. We have learned about the constant polynomial, the linear polynomial, the quadratic polynomial, and the cubic polynomial, right? Okay. Now, guys, in today's session, we are going to learn a few things. Okay. The first one is what is the meaning of zeros of a polynomial. We are also going to learn what is the graph of a polynomial, right? What kind of graph we are going to get for a polynomial. And yeah, this lecture is gonna be a very, very important lecture because in today's session, you are going to learn how to make the graph of a polynomial, and that would be helping you in 11th grade, in 12th grade as well. Okay. So I hope everyone is clear about that now. Let's start then. Okay, everyone. So look, basically for today's session, the topic, as I told you, it's zeros and geometrical meaning of zeros and graph of a polynomial. Okay, guys, but before that, let's try to understand what is the actual meaning of a zero of a polynomial, right? So guys, in the last class I explained to you, right, a polynomial px is given by, let's say it is a quadratic polynomial. Let's take any quadratic polynomial as x square plus 5x plus 6. Okay, right guys? Now if I'll ask you that what is the value of the polynomial at x equals to 1, what's going to be your answer? You will say, sir, at x equals to 1, if you want to find the value of the polynomial, in the polynomial at the place of x, you will just replace 1, right? Okay, so you are going to get p of 1 equals to 1 square plus 5 into 1 plus 6. Okay guys, and that's gonna be 12. Okay, so what I did over here, I got the value of the polynomial at x equals to 1. Simple. But what is the relation of this thing with 0? Even there is a relation. Try to understand. Now at x equals to 1, the value of the polynomial is 12, right? Guys, that means there can be some value of x, right, at which the value of the polynomial can be 0 as well. Is it possible? Let's see. So now I'm saying you to put x equals to -2, and let's see what happens. Look at this now. So you will get p of -2 equals to -2 whole square. Okay, it's -2 whole square. Don't make it -2 and then do the square of 2. No. Okay, x is -2. So at the place of x, you have to substitute -2. Okay, plus 5 into -2 plus 6. Okay, everyone, -2 square is 4. 4 minus 10 plus 6, and that's gonna be 0. And here comes the concept. What is happening when I am putting x equals to -2? I'm getting the value of the polynomial as 0. Okay, so here x equals to -2 is called 0 of the polynomial. Okay, so let's try to understand the definition. What is the, I will not say geometrical meaning. Right now I'm just telling you the meaning of zeros. What I'm telling you is that meaning of 0, right? Meaning of 0. So if at x equals to a, guys, please pay attention. If at x equals to a, p of a, basically the value of the polynomial, right, equal to 0, then x equals to a is called 0 of the polynomial. It's called the 0 of the polynomial, right, everyone? So basically the same thing happened over here. When I am putting the value of x as -2, I am getting the value of the polynomial as 0. Okay, so basically you will say that x equals to -2 is a 0 of the polynomial. I hope that clear to everyone, the meaning of 0 of a polynomial. Okay guys, now actually what we are going to learn today, actually we are going to learn, more advanced about the zeros. Okay, but before that, just make sure that you understand the 0 of a polynomial, right? Okay, whatever value of x you will put, if there is a one value of x at which the value of the polynomial is coming as 0, then
that value of x is called a zero of the polynomial. Simple. Okay. Abhi dekho. What happens, guys, is that when I am trying to plot the graph of a polynomial, x is there. When you plot a graph, what you need x coordinate, you need y coordinate. That's very simple. Okay, you remember this now? X axis, y axis, abscissa, ordinate, right? All of these things. So to plot the graph, we have the x axis, we have the y axis, and we need the x coordinate, and we need the y coordinate of something to plot it. Here, when I'm talking about the polynomial, I have x. For example, you put x equals to 1, and over here you put x equals to minus 2. So you have x. But what about y? I can't see any y over here. Even there is no y in this complete picture, right? On the page, there is no y I can see, right? Okay, there's only one y, definitely. This one is a y, right? Apart from that, there is no y, I think. Okay, now look at this. The important thing over here is that the value of the polynomial, that's your p1, that was 12, and your p minus 2, that was 0. This is represented in the graph as y. Please pay attention. So if I'll ask you that if x equals to 1 in this polynomial, what is y? You will say it's 12. If x equals to minus 2, what is y? You will say it is 0. That means the graph of the polynomial is going to pass through the point 1 comma 12. How do you know that it's going to pass from 1 comma 12? Because when x is 1, y is 12. Okay, and at the same time, the graph of the polynomial, whatever graph we will get, it is going to pass through a point minus 2 comma 0. How do you know it is minus 2 comma 0? Because when x is minus 2, you are getting the value of y as 0. Got it, everyone? So basically, if you are putting some value in the polynomial x equals to something, at that you are getting some value of polynomial, let's say y. So that particular point x comma y will be lying on the graph of the polynomial. That is clear now. Now look at this. We are talking about the geometrical meaning of the zero. Okay, please pay attention on this thing now. What is happening is that, as I just told you, that when the graph is passing through a particular point, right, and when it is passing through the zero, specifically the zero, okay, at the zero, p of x would become 0. That means y is 0, right? That means whatever 0 you are talking about, the 0 is always in this form, a comma 0. I mean, like, there would be some x coordinate, but y has to be 0. Why? Because that is the meaning of 0 now. That you put some value of x, and at that value px would become 0. And px ko you can just say px bolo ya y bolo, that is the same thing, right? So px nahi bol ke I am just saying it as y, right? So what I am saying is that jab x a hai to y is 0. Okay, ab ek bahut important baat, guys, just think about that. If x is equals to a, और यहाँ पे देखो in this definition it's written k, that's fine, right? So if x is equals to a, y is equal to 0, where the point is going to lie in this whole xy, this Cartesian plane, x-axis, y-axis, where the point going to lie when its y coordinate is 0? Think about it, think about it. Y is 0, right? Is it going to lie over here? No, that's wrong, guys. This point is going to lie on the x-axis. If y coordinate of a point is 0, it is going to lie on the x-axis, right? Okay, so the point is going to lie on the x-axis. You can see in all the graphs over there, right? The zeros are lying on the x-axis, right? It has been, you can see it's dotted with the red color, right? All of them are zeros because zeros lies on the x-axis, right? Okay, first of all, 0 lie on the x-axis, first thing that we know now. And 0 lies on the graph as well. Why? As I told you in the previous slide, look at this, that minus 2 comma 0 is going to lie on the graph of the polynomial px, right? So minus 2 comma 0 lie on this graph as well, and minus 2 comma 0 lies on x-axis as well. Now just think about it. I am saying there is one point which lies on the graph of px as well, which lies on the x-axis as well. ठीक है? ऐसे सोचो आप लोग. I'll tell you in that way. This is one of my finger. Okay, fine. This is my other finger. There is a point which lies on this finger as well and this finger as well. Abhi to there is no point. Ab let's say finger aise hain. Look at the fingers, right? These fingers are intersecting at one point, right over here. So abhi jahan pe these fingers are intersecting, the point at which they are intersecting, this is the point which is lying on both the fingers, right? Ye jo point hai.
जहां पे काट इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, राइट? एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन बोथ द ग्राफ्स, यस और नो? Yes, that is true. Okay. Abhi dekho. What I'm saying again is that let's come back to that point. That point was that if there is a point which is lying on this graph as well, this graph as well, that means this is the point of intersection of these two graphs. This is the point of intersection of these two graphs. That means the zero of a polynomial is intersection point of the graph with the x-axis. Okay, the zero of a polynomial is the intersection of that graph of polynomial with the x-axis. For an example, I'll make a graph of a polynomial like that, right? And if I'll ask you, tell me, bachcho, how many number of zeros are there for the polynomial? You don't even know what kind of polynomial it is. Okay, it is cubic or biquadratic, or you know nothing about that. But if I'll ask you that how many zeros are there, you can tell me very easily. How? You will say, sir, the number of times the graph is going to intersect the x-axis is same as its zeros, because these two graphs are intersecting at zeros only, right? So basically you can see that the graph intersected x-axis at 1, 2, 3 times. That means there are 3 zeros of the polynomial px. Okay, if the graph is intersecting x-axis 5 times, there would be 5 zeros in that case, right? Okay, so now let's quickly read the point. What are they? The zero of a polynomial is the x-coordinate of the point where the graph intersects the x-axis. I already told you. Okay, fine. The graph of linear polynomial intersect. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. Okay, fine. Okay, fine. हमें पता ही है. Guys, for linear polynomial, we have maximum 1 0. For quadratic, we have maximum 2 0. For cubic, we have maximum 3 0. For biquadratic, we have maximum 4 0, and so on and so forth, right? That's simple. For linear, there is 1. For quadratic, 2. For cubic, 3, and so on, right? Simple, eh? Let's move forward now. Okay, fine. So far, guys, what we have learned what is the meaning of a zero of a polynomial. Okay, so basically what we are doing is that if you are putting some value of x at that value, if the polynomial's value, the value of the polynomial is coming as 0, then that value of x is called zero of the polynomial. The first thing, that's what we have learned. Second thing we have learned is that the zero is the point of intersection of the graph of the polynomial with the x-axis, right? So graph of the polynomial intersecting the x-axis, number of times, that is equal to the number of zeros. If it is intersecting 5 times, there are 5 zeros. If intersecting 2 times, there are 2 zeros. That's it. Simple. Okay. Now let's move forward. Here coming the important point now. Graph of a polynomial, right? So guys, as I told you in the last class as well, देखो, सबसे पहले we need to understand the graph of linear polynomial. What I told you in the last class is not that. In the last class I told you line, linear में ना एक word is hiding. That hidden word is line. Linear graph of the linear polynomial is a line actually. Okay, the graph of the linear polynomial is a line. Now let's try to understand how to draw the graph of a linear polynomial first of all, right? For example, I'll take let's say पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना. रेड रेड ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना. इज अ लॉट ऑफ रेड ओवर देयर. ब्लू करते हैं चलो. देखो, लेट्स से वी नीड टू मेक द ग्राफ ऑफ 2x plus 3y equal to 6. आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट? ओके, सो राइट नाउ आई एम टीचिंग यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल. बहुत सिंपल है. सही तो इक्वेशन है. ओप सॉरी. ट्रू ट्रू ट्रू, ये इक्वेशन हो गई ना. दिस इज इक्वेशन, इज नॉट अ पॉलिनोमियल. आई मीन लाइक दिस इज अ पॉलिनोमियल ओनली, बट दिस इज नॉट द वे ऑफ राइटिंग इट, राइट? इट इज नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो इसको पहले सही से लिखना पड़ेगा, राइट? एक सेकंड रुकिए. ओके, देखिए. सो ड्रॉ graph of px equals to 2x plus 5. Guys, I told you px को हम as a y treat करेंगे and x is there only. Okay, we will treat px as y. Fine, fine. अब देखो, अभी to draw the graph, what you have to do, please pay attention on this thing. You can put any value of x, right? ठीक है, easy value of x put करो to get the value of px. Okay, let's say if x equals to 1. Okay, px क्या होगा? Think about it.
Think about it, everyone. Solve it yourself, yaar. Quickly, come on, fast. 2 plus 1, 7. देखो कितने जल्दी किया. Okay. If x equals to 2, solve it fast, quickly, quickly, quickly. Everyone, solve in your mind. Well done, well done. Okay, perfect. 9, very good. A lot of people got the answer. Nice. Now look at this. 1,7. अब देखो, exact graph paper नहीं है, but you can just guess कि 1,7 would be somewhere here, right? And 2,9 would be somewhere here, right? You have 1,7, you have 2,9, right? Abhi, if you will join these 2 points, देखो थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है यहाँ पे, so थोड़ा सा वो होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है? This is the graph of the polynomial px equals to 2x plus 5, right? If someone asks you what is the graph of the polynomial px equals to 2x plus 5, you will say this kind of graph you will get, and that graph is passing through the first point 1,7, abscissa 1, ordinate 7, and the other point is 2,9. Got it? So whenever it comes to drawing the graph of the polynomial, linear polynomial rather, what you will do, you will put any value of x, you will get the value of y, you will plot the points, you will join them, you get a line. Simple process, right? चलो एक जल्दी से एकदम फास्ट ड्रॉ करके दिखा दो. ड्रॉ px equals to x plus 3. एकदम फास्ट, क्विक. You have to be quick. हाँ, एक बात और, प्लीज टेक केयर ऑफ वन थिंग इन योर माइंड. यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है? ऐसे में सोचना कि सर इज टेकिंग 1 and 2 ओनली, सो वी विल आल्सो टेक 1 and 2. नो 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 नो. अभी अभी कर रहे हो ना सॉल्व, अपना जो मन है वो वैल्यू, जस्ट टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, व्हाटएवर यू वांट टू टेक. व्हाटएवर वैल्यू ऑफ एक्स यू वांट टू टेक, टेक इट, सॉल्व इट योरसेल्फ. कर रहे हो सॉल्व? देखो, करो करो, ठीक है ना? यू डू इट योरसेल्फ. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. Oops. You were here, right? Okay. हाँ गाइस, हुआ? एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं ना इसके बाद, बिकॉज आई थिंक जरूरत पड़ेगी इसकी हमें. जस्ट अ सेकंड, आप लोग सॉल्व करो. यू गाइस सॉल्व इन दैट मीनवाइल. या आई एम थिंकिंग टू ऐड वन मोर स्लाइड ओवर हियर. एक सेकंड रुको बस. यू गाइस सॉल्व. एक सेकंड बस, ठीक है? आई एम जस्ट एडिंग वन मोर स्लाइड. इन द मीनवाइल यू गाइस कैन सॉल्व इट क्विकली. देखो, so guys, I asked you to draw the graph of px equals to x plus 3, right? And I asked you to whatever point you want to take, now just take the point, right? Okay, now look at this. I am putting x equal to 0. Okay, so I'm getting px equal to what? 0 plus 3 is what? 3. Fine. I'm putting x equals to 1. What I'm getting px is 3 plus 1, 4. Maybe you are putting some different value, but don't worry, as I told you, graph is going to be the same. Okay, so first point is 0, 3, x0, y3. Second is 1, 4, right? अब देखो, 0, 3 is let's say somewhere here. 1 थोड़ा x इस साइड होगा और 4 थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, तो 1, 4 is going to be like that, right? अब look at my graph. Your graph should be in the same way. आपका ग्राफ भी ऐसा ही एक लाइन होनी चाहिए. If you are getting that, it's correct. If you are not getting that, then it's not correct. You need to check that, right? Got it now? Let's move. चलो, यहाँ से एक थोड़ा सा होमवर्क ले लो आप लोग पहले. You need to draw the graph of px equals to 2x plus 9. Okay. You need to draw the graph of px equals to 2x minus 3. You need to draw the graph of px equals to x. Okay. So px equals to x now, I will tell you. This is your homework. These two are your homework. This is right now I'm telling you the classwork. Okay. Px equal to x, because this is something different. That's what I'm telling you. Dekho, how to draw px equals to x. It's also very simple actually. Not very difficult. Look, you have to do one thing. You need to put the value of x to get the value of y, or to get the value of px, right? You put, let's say, x equals to 1. You get px equals to 1 as well. Okay. If x is 2, px will also be 2, right?
Okay, that means the point that we got is 1 comma 1 and 2 comma 2, right guys? So 1 comma 1 will be somewhere here hoga, or 2 comma 2 somewhere here, right? You join these 2 points, you get the graph of the polynomial. Which polynomial? Px equals to x, right? This is the graph of px equal to x. Got it now? Okay, x को 1 put किया, px is also 1, x is 2, px is also 2. So the graph is going to pass through 1 comma 1 and 2 comma 2. We get the answer, right? Okay guys, let's move now. Perfect. Look at this now. So now we are going to do the graphical representation of a quadratic polynomial, right? We are going to do now the graphical representation of a quadratic polynomial. देखो, but before that ना मैं कुछ discuss करना चाहता हूँ. Let me discuss something with you. Guys, if you remember in the last class also I told you this thing कि you must have seen cricket, right? Okay, and I told you कि cricket के अंदर जो ball है that goes in that way, in a parabolic way, right? And that shows the graph of a parabola. Okay, so now today we are on that point that we are going to discuss the graph of this parabola, the quadratic equation. Okay, the quadratic polynomial, I would say. So the graph of a quadratic polynomial is a parabola, first of all, guys. Okay, it has to be in the parabolic shape. Okay, what kind of shape a parabola can have? Look at the examples. Okay, as I told you, it can be either like that or it can be either like that. अभी ना इसको ना बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? इसको मतलब हम 11th और 12th लेवल तक लेके जाएंगे, एज आई टोल्ड यू, ठीक है? तो जस्ट कम बैक टू दिस पॉइंट. देखो, सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग और ड्राइंग द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला, राइट? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, प्लीज पे अटेंशन, दैट यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px इक्वल्स टू ax square plus bx plus c, right? That's a quadratic polynomial and its graph is going to be a parabola. सबसे पहले first thing we need to decide is about the shape. Okay, sorry, that what kind of shape this graph is going to take. Okay, देखो, मजा आ रहा है ना? अरे अरे यार मजे लो, ऐसे मत करो, मजे लो भाई, मजे लोगे तो मजा आएगा, ठीक है? ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, ये ऐसी चीजें सीखने को मिलती है कम, तो सीखो, मजा आएगा, ठीक है? देखो, सो अभी हमने बोला कि इफ a is positive, right, और a can be negative, there are two possibilities. ओके, इधर ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा. ना 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 सर, सर ए जीरो भी तो हो सकता है सर, सर बताओ ना सर, भूल गए? I told you when I taught you quadratic polynomial that a cannot be zero. If a would be zero, it can become a linear polynomial, right? Okay, a cannot be zero. Important point. We will never forget it. Okay. Now, guys, अगर a पॉजिटिव होता है ना, तो पैराबोला का माउथ ऐसे ऊपर खुला हुआ आता है, ठीक है? और अगर ए नेगेटिव होता है तो पैराबोला का नाम माउथ जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा. अब नीचे तरफ कैसे खोलूं बताओ? तो ऐसे नीचे तरफ माउथ खुल जाएगा, ठीक है? इट्स अ माउथ ऑफ पैराबोला ना, ऐसा इसका माउथ है. ये ओपन ऊपर हो रहा है इफ ए इज पॉजिटिव एंड इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स इफ ए इज नेगेटिव, राइट? ये यहाँ पे एक मिनट रुको ना, ये आई थिंक कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकता है इससे. So let's not create any kind of confusion. This is nothing. Okay, fine. Okay, so as I told you that a positive upward parabola, a negative downward parabola. ठीक है? Got that point everyone? Suppose हमने आ गया वो point. A सबसे पहले we'll check A. Okay, after that second thing. देखो second thing इसके अंदर हमारे पास जो आती है, we are trying to make the graph ना. First of all we'll check A positive होगा तो upward parabola बनेगा, A negative होगा तो downward parabola बनेगा. That's it. That's the first thing we need to understand. Second thing that we need to understand over here is that कि zero of the polynomial, right? So guys, अभी हमने discussion किया है कि that the graph of a quadratic polynomial passes through its zero on the x-axis, right? Okay, so अगर there are two zeros, then graph will pass through 2 points. If there is 1 0, the graph will pass through 1 point. Okay, fine, fine. अब देखो, for an example, if I'll ask you to make the graph of px equals to x plus 1 into x plus 2, ठीक है? This graph I am asking you to make it. Okay, अभी देखो, right now just try to understand it in that way कि if I'll put x equals to -1, okay, you can see that p of -1 is coming as 0. -1 plus 1, 0, 0 into something is 0. And if x is -2, p of -2 is also coming as 0. ठीक है? तो यहाँ पे ये -2, 1 से पास कर रहा है and -1, 0 से पास कर रहा है. I make those points on the x-axis, right? Definitely ना, zeros are lies on the x-axis only, right?
और देखो इफ यू सॉल्व इट ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, ओके, एंड दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फाइन, अभी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इट इज अ, टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, टेल मी, इट्स अ क्वाड्रेटिक, है ना, और उसका a पॉजिटिव है, दैट मींस अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब वी जस्ट नीड टू मेक अपवर्ड पैराबोला व्हिच विल पास थ्रू दीस टू पॉइंट। कैसा बन सकता है बताओ, ऐसे बनेगा ना, एस को भी ऐसे पास करेगा, यहां से भी ऐसे पास करेगा, यहां से ऊपर चला जाएगा और यहां से ऊपर चला जाएगा। दिस काइंड ऑफ पैराबोला वी आर गोइंग टू गेट, राइट? ओके, सो ये एक आइडिया मिल गया आपको हाउ टू मेक द ग्राफ। ओके, एक्चुअली वी कैन ऐड सम मोर थिंग्स ऑन दिस ग्राफ, सो लेट मी ऐड सम मोर थिंग्स। ओके, मैं कुछ ऐड करता हूं, दस यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। फाइन, जस्ट एक सेकंड रुकिए आप लोग। एक स्लाइड और एंटर करनी पड़ेगी हम लोगों को, राइट, है ना? तो एक बार एक स्लाइड और एंटर करते हैं एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में और नॉलेज देता हूँ, ठीक है गाइस? जस्ट अ सेकंड। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थे, राइट? हाँ, ओके, न्यू स्लाइड, फाइन। अरे हमने एक गड़बड़ कर दी शायद बच्चों, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हुई क्या? नहीं हुई, हाँ उसके पहले स्लाइड इंसर्ट हुई हमसे, बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अभी आप लोग देख लेना, ठीक है, जब व्हेन यू गो टू दैट ना, तो देख लेना वो स्लाइड पहले, स्लाइड बाद में, चेक कर लेना प्लीज, ठीक है? हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा, वी अंडरस्टूड दिस पार्ट। बट लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये बहुत बहुत एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, दिस नॉट वेरी एग्जैक्ट ग्राफ, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाते हैं। अब देखो, what we can do to make it more exact, okay, what we can do it to make it more exact, let's try to understand that point, है ना? देखो वो पॉइंट क्या है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट वी अंडरस्टूड दैट ए विल सी, ओके। सेकंड पॉइंट वी अंडरस्टूड दैट कि उसका जीरो कौन सा है, वो उससे वो ग्राफ पास करेगा। तो क्या थर्ड पॉइंट इज दैट, देखो अभी हमने वी जस्ट लर्न दैट इफ यू नो x, there is some value of x at which y would be 0, then the graph will pass to the x axis, right? This is the same kind of point, just think about that. If x is 0, then what was px, एक बार मैं लिख देता हूं फिर से, px was ax square plus bx plus c, right guys? Okay, now if I am saying that x is 0, so you will get p of 0 as what, a times 0, okay, plus b times 0 plus c, and that is what c, so p of 0 is c. Got it? If x is 0, p of 0 is c. Basically what is happening that the graph is passing through 0 comma c. सर ये 0 comma c से समझ नहीं आ रहा सर, ऐसे मत समझो ना, ऐसे आप समझोगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे समझो, लेट्स से पॉलिनोमियल px इज गिवन टू यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके। इसके अंदर क्या करना है, यू पुट x इक्वल टू 0, 0 प्लस 3 क्या बनेगा, px इक्वल टू आ गया 3, दैट मीन्स द ग्राफ विल पास थ्रू 0,3। अब ये मैं तुम्हें सीधा बता, दिस वाज द डायरेक्ट थिंग, क्योंकि c है ना, c इज 3 ओनली ना, कांस्टेंट टर्म, तो पास थ्रू 0,c, पास थ्रू 0,3, you don't need to mug it, but you can put x equal to 0, right? So देखो यहाँ पे एक और चीज जो हमें सीखने को मिल गई, वो ये मिल गई कि the graph will pass to 0, c, ठीक है? अब देखो, I asked you to make the graph of x square plus 3x plus 2, okay, you put x equal to 0, you'll get the point as 0, 2, right? So basically what you have learned now additionally, that it will also pass through a point 0, 2, minus 2, minus 1 and minus 1, 0. तो आपका ग्राफ थोड़ा और ज्यादा अभी क्लियर हो जाएगा इस तरह से, okay, because ये point minus 1, 0, this is minus 2, 0 and that point is 0, 2. तो अभी थोड़ा सा ग्राफ more clarity की तरफ जा रहा है, okay. First of all we'll check a, we'll check the zeros from which the graph is going to pass to the x-axis, then we will put x equal to 0 and we'll get one more point by which the graph is going to pass to the y-axis, right? And by joining these 3 points we'll make the graph. Simple है? Is there any doubt? टेल मी, एक एग्जांपल कर लेते हैं, राइट ना? हाँ समझ रहा हूँ मैं आपकी फीलिंग्स, डोंट वरी, फीलिंग बहुत जरूरी है, फीलिंग लेते रहो, फीलिंग लेते रहो, नहीं रोकेंगे, लेते रहो, फीलिंग लेते रहो। देखो क्वेश्चन है कि लेट्स से px इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 1 एंड विद अ नेगेटिव साइन, ये है इंपॉर्टेंट,
का ग्राफ बनाना है टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हाउ डू आई नो दैट? सॉल्व करो इसको। माइनस ऑफ मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स एंड माइनस 2, राइट गाइस? सो ये आपका हो गया px। इफ यू सॉल्व इट फर्दर, you will get px equals to minus x square minus x plus 2. Got it? First thing. अब देखो a नेगेटिव है, क्या बात है, a नेगेटिव है इस बार। ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई फिर। a ही नेगेटिव है, मतलब ग्राफ विल पास थ्रू, सॉरी, a graph will be a downward parabola. Why? Because we learned a negative downward. Got it? Second thing is the zero. देखो आप जीरो के लिए यहां से मत देखो, आप जीरो को आप देखो यहां से। Because if you put x equal to 1, 1 minus 1 would be 0, 0 into something would be 0. तो x equal to 1, एक तो 0 आ गया, x equal to 1. So I'll write it over here. 1, 0 is at x equals to 1. Okay, px is 0. First thing. एक बात और देखो, if I put x equal to minus 2, x equals to minus 2 पे x plus 2 would be 0 ना? और x plus 2 0, that means a complete is 0. So at x equals to minus 2, px is again 0. So point what we got is that 1 comma 0 and minus 2 comma 0. First of all, we got the point. Clear? Third thing, that is 0 comma c, that is 0 comma 2. So the graph is going to pass through 0 comma 2 as well. Okay guys, the graph is going to pass through a point and that point is 0 comma 2. So graph यहाँ से 0 comma 2 से pass करेगा ही करेगा, ठीक है? अब देखो ग्राफ किस तरह का आएगा। बेसिकली यहाँ पे graph would be like that, pass through 0 comma 2 and then 1 से pass करते हुए graph will go like that. Okay, understanding my point, everyone? You made the graph of the polynomial, right? I hope it's clear to everyone now. There is no issue about it. Tell me, is there an issue? No issues, right? Got it? Got it? How to make a graph of a polynomial, quadratic polynomial? You need three things. First thing, a positive upward, negative downward. Zero of the polynomial by which the graph will pass through the x-axis. And the last point, if you put x equal to 0, you get the point at which the graph passed through the y-axis, the vertical one, right? Clear, everyone? So we learned it now, how to draw the graph of a quadratic polynomial. सब clear है? No doubt? Tell me. No doubt ना? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं. Now, let's try to understand that graphing of a quadratic we are done now. Okay, how can we graph, maybe a cubic or maybe a different kind of polynomial? एक बहुत simple सा process है that we need to follow. That's it. देखो मैं आपको समझा देता हूँ process क्या है. Let's say we have to draw the graph of px equals to any polynomial you take. Okay, but हाँ, it should be in factorized form right now because अभी you are not quite good in factorization of a polynomial. अभी I will tell you in the next classes how to factorize a quadratic, a cubic or something. तब you will be very clear about that as well. But right now if तुम्हें factorization नहीं पता है, so I will give you the polynomial factorized form में ही, ठीक है? तो ऐसे मान लो polynomial है x plus 1, x plus 2, x plus 3, ठीक है? इसका ग्राफ बनाना है आप लोगों को। तो आपको क्या, what are the point that we need to keep in our mind to make the graph, वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? देखो बहुत सिंपल सा, बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस रहेगा. What are the zeros of the polynomial? कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है? देखो ये कहाँ पे जीरो होगा? -3 पे. This would be 0 at -2 and it would be 0 at -1. So basically zeros आ गए polynomial के -3, -2 and -1. So graph will pass through these 3 points first of all. तो ठीक है, फाइन. तो यहाँ से पास कराएंगे, यहाँ से पास कराएंगे, यहाँ से पास कराएंगे. अब यहाँ से पास करना, देखो प्लीज प्लीज पे अटेंशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? अब आप बोलोगे सर या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, राइट? तीनों से पास कर गया, फाइन. और कहीं से पास नहीं करेगा फिर एक्स एक्सिस को, उन तीनों से पास करेगा सिर्फ और सिर्फ. या फिर सर ऐसा भी हो सकता था सर, लेकिन सर एक बात बताओ सर, आप ये तो आपकी इच्छा थी तो आपने ऐसा बना दिया सर. सर मेरी ना इच्छा थोड़ी अलग है. माई विल इज डिफरेंट देन योर्स एंड आई एम मेकिंग this kind of graph. What's the problem? Yours is passing through -3, -2, -1 from the x-axis. Mine is passing through the same. Then what's the problem? Why mine is not correct and why yours is correct? Tell me about that. Actually मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एक और पॉइंट है that we need to keep in our mind. Okay, that is, पहले तो first point to make this kind of graph, you will always keep the zero of the polynomial in the mind. Okay,
And second thing that we are going to keep in our mind is that put x equals to 0 and get px. ओके, देखो अभी दो ग्राफ थे यहाँ पे, रेड और ब्लू आपको लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब एक काम कीजिए आप, जस्ट पुट डू वन थिंग इन दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन, पुट x इक्वल टू 0। कर एक बार 0 पुट, क्या आ रहा है देखो, px इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, यहाँ पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, आई एम पुटिंग इट ओवर हियर। 0 प्लस 3 3, 3 into 2 into 1 6 आ रहा है। ग्राफ दैट मींस व्हेन x is 0 y is 6, so graph will pass through 0,6। अब एक बात बताओ, या तो ग्राफ ये बनेगा या ये नीचे वाला बनेगा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, इन विच ग्राफ, और रेड और ब्लू, which graph it can passing, it is passing through 0,6 rather, I will not say it can, it is। look at this ना, यहां पे पास कर रहा है फ्रॉम द y एक्सिस 0,6, या तो ये पॉइंट हो सकता है, either this can be the 0,6, which one is 0,6 we need to understand that। देखो below x axis y होता है नेगेटिव, तो for this particular point y has to be नेगेटिव ना, तो 0,6 तो इम्पॉसिबल है फिर। दैट मींस ऊपर वाला क्या है, ट्रू है, दैट मींस रेड वाला क्या है, ट्रू है, दैट मींस रेड वाला इज ट्रू। मैं लिख देता हूं रेड वन इज ट्रू, इज करेक्ट, रेड वन इज करेक्ट। गॉट द प्रोसेस गाइस, हाउ टू मेक द ग्राफ। एक मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत इसके अंदर हो रही है अभी भी, आई नो दैट, इसीलिए तो मैं ये कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बताओ, मैं इसीलिए एक और स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूं, डोंट वरी। ओके, लेट मी इंसर्ट वन मोर स्लाइड ओवर हियर, ठीक है। हाँ बस एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए बच्चों, एक सेकंड दीजिए, अभी जल्दी से हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। ओहो हो, अरे यार बाय मिस्टेक ना मैंने वो शायद पीपीटी बंद कर दिया अपना, एक सेकंड दो गाइस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी, वी हैव टू ओपन इट अगेन। Yeah, I think it's there. I hope whatever we have wrote on the PPT, it's there. No, it's not there. Oh my God, that's a problem then. सेव नहीं हुआ यार कुछ भी हमने जो लिखा था बच्चों, ये तो अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। एक सेकंड रुको आप, ठीक है, लेट मी चेक इट अगेन, गिव मी अ मिनट। पीपीटी यार वैसे सेव होना चाहिए था उसको, बट आई थिंक इट डिड नॉट। The reason behind that is we don't know even। वो एकदम से आई थिंक द रीजन वाज वेरी क्लियर, वो अपने आप ही हमारा जो है पीपीटी क्लोज हो गया था, दैट कुड बी अ रीजन, राइट। चलो ठीक है, कोई नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम जहां पे थे हम वापस वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइस। आई होप यू हैड मेक योर नोट्स, राइट, यू हैड योर नोट ना, ठीक है, फाइन एवरीवन। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर से जहां पे हम थे, ओके। ओके जस्ट अ सेकंड। तो गाइस हम थे ग्राफिंग अ पॉलिनोमियल पर, राइट, है ना, ओके देखो फिर, ओके सो अभी एक एग्जांपल करके देखते हैं एंड वील अंडरस्टैंड इट मोर, ओके। लेट्स से px इक्वल्स टू x प्लस 2 into x plus 3 into x plus 4 into x plus 5, fine। so you do a simple thing, मैंने आपको तो बोला just follow those steps, you can see that it is 0 at -5 -4 -3 and -2। so graph इससे पास करते हुए अगर बनेगा तो it can be like that, or it can be this dotted one as well, right। we need to see which one it can be, right, dotted one या फिर जो hard one है that one, okay। so look at this, you just put x equal to 0 to check it। if x equal to 0, you will get p of 0 as 0 plus 2 2 into 3 into 4 into 5, and that is definitely a positive number, right guys। 120 आ रहा है ना, इट्स पॉजिटिव, राइट। अब वापस से फिर वही बात, ये तो ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला तो पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो फिर इसका मतलब क्या सीखे, क्या सीखे बताइए, क्या सीखे, सीखे कि नहीं सीखे, सीखे ना, ये सीखे कि ऊपर वाला सही और नीचे वाला गलत, तो ब्लू वाला क्या हो गया, ठीक हो गया, ब्लू वन इज करेक्ट। गॉट द प्रोसेस एवरीवन, इज देयर डाउट इन दैट, कोई डाउट है, नहीं है, परफेक्ट सबको। तो होमवर्क लिख लीजिए फिर एक फटाफट से आप लोग,
ड्रॉ करके लाइए ग्राफ, एक ग्राफ को, x+2 इंटू माइनस साइन है बाहर, बाहर माइनस साइन है, भूल मत जाना, x-3 कर देता हूं, चलो ठीक है। ड्रॉ दिस ग्राफ एज योर होमवर्क, फाइन गाइस, ओके। सो उसके अलावा ग्राफिंग और पॉलिनोमियल वी लर्न नाउ, ओके। और ये दो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, ये भी आप लोगों को कर कर आना है, ठीक है। ओके एवरीवन, these questions I will discuss in the next class, ठीक है। क्या एक काम करता हूँ, these I will discuss right now only, आप ना ये वाला होमवर्क में नोट कर लिया आप लोगों ने, एक मिनट रुकिए, ये कर लिया होमवर्क में नोट, राइट? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ओके। ये वाले मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपको यहीं पे, thus you will understand कि how to solve these kind of problems, right? देखो, so the graph of a cubic polynomial is given below, find the coefficients a b c and d। देखो अब इसको अच्छे से देखो आप, -2 से ग्राफ पास कर रहा है, 1 से कर रहा है और 1 से कर रहा है, राइट? ठीक है, we need to find the values of a b c and d, है ना? Try to understand the point. The graph is passing through a point over here on the y axis, that is 0,1। ग्राफ 0,1 से पास कर रहा है, ग्राफ पास कर रहा है, it is passing through -2,0 as well, okay। it is passing through one more point, देखो यहाँ पे 1,0 है, और ये पॉइंट देखो, अब ये पॉइंट क्या है, 1,2 है, okay। graph is passing through these 4 points, right? which 4 points, 1,0, 0,1, 1,2, -2,0। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इज रियली रियली इजी। हाउ, देखो, इफ x is 1 y is 0, इफ x is 1 y is 0 ना, देखो पहले अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको बहुत इजीली। x को 1 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा, 1,0 पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है, x को 1 पुट कर दो और y को 0 पुट कर दो, 0 इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू 1 का क्यूब प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 प्लस d। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब अगला क्या करो, x जब -2 है तब भी y क्या है, 0, x को -2 पुट कीजिए, यू विल गेट -2 का होल क्यूब -8a -2 का स्क्वायर 4 4b -2c प्लस d, और वो भी क्या है, 0। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन देखो, ग्राफ इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, 0,1, तो जब x 0 है, इंपॉर्टेंट है अभी ये, x 0 पे इस बार y 1 होगा, तो y तो 1 होगा, x हो गया 0, 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 इंटू समथिंग, सब 0 0 0 है, तो d सीधा 1 आ गया। क्या बात है, परफेक्ट। बताया तो एक बार फिर से देखो, ऐसा हो जाएगा ना, a इंटू 0 का क्यूब 0 प्लस b इंटू 0 का स्क्वायर वो भी 0 प्लस c इंटू 0 वो भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 सब कुछ 0, सिर्फ d बचेगा, तो d इक्वल टू 1। यहां से we directly got the value of d equal to 1, और ये बहुत ही बढ़िया मजेदार काम हो रहा है। अब लास्ट 1,2, x को 1 पुट करो, y2 आ रहा है, तो 1 पुट करने से क्या आएगा गाइस, एक मिनट, -1 है, सॉरी ना, -1, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि गड़बड़ कर दिया मैंने, -1 है ना, -1,2 होता है, तो -1 पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, प्लीज पे अटेंशन, a इंटू -1 का होल क्यूब प्लस b इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू -1 प्लस d, ठीक है। सो विल गेट 2 इक्वल्स टू -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपली एक सिंपल सा काम किया जा सकता है, वी ऑलरेडी नो कि डी तो 1 है, ठीक है, और अगर डी 1 है तो एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 था, इक्वेशन नंबर 1 से उसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसके नीचे बस बस समझना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को ऐड करो जरा एक बार, 2 इक्वल टू क्या आ रहा है, ए कैंसिल, ए माइनस है, बी प्लस बी 2b हो गया, और d प्लस डी 2d हो गया, और d तो खुद ही कितना है, 1 है, तो 1 इंटू 2 2, तो 2b, तो ये बन गया 2b प्लस 2 इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, बेचारा b 0 होना पड़ेगा, b 0 d1, b 0 d1 हो गया, यहां पुट करिए आप b को 0, यहां पुट करिए आप d को 1, क्या बना है बताओ, a प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स a प्लस सी इक्वल टू -1 बन गया। अब यहाँ पे यू विल अगेन पुट b इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 1, राइट गाइस, ओके। सो यू विल गेट -8 टाइम्स ऑफ a -2 टाइम्स ऑफ c plus d, that is 1 equal to 0, basically 8a plus 2c equal to -1 हो जाएगा, उससे जाएगा ना, it would become -1, ठीक है, got it। अभी what you will do, अब कुछ नहीं है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, ओके। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड c एज वेल, राइट, गॉट इट। थोड़ा लेंथियर है, अच्छा क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू। एंड अभी ना एक्चुअली ऐसा है कि गाइस ना, इसके सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स हैं, and that are quite easier as well, but abhi whatever we have learned, whatever is your knowledge, according to that I am solving this problem, right? apart from that, ये तो एक सीधा का सीधे जो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है, मतलब डायरेक्टली मैं इसका आंसर ऐसे भी लिख सकता था कि ये बनेगा x प्लस 2 इंटू
x माइनस वन का होल स्क्वायर, और इफ x इज जीरो तो y1, x को जीरो पुट किया तो y1 आना चाहिए, तो हाफ। सो प्रोबेबली 1/4, 1/4, एक मिनट चेक कर लेता हूँ फिर वापस से। -2 ठीक है, 1 पे 0 ठीक है, और स्क्वायर तो बनना ही है, और x 0 पे y1 है, इसको 0 पुट किया तो क्या y1 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये ऐसा बनेगा आंसर इसका। ठीक है, ये अभी आप भी सीख जाओगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, यू आल्सो लर्न दिस। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके एवरीवन, आप भी सीख जाओगे सब चीजें करना। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट अभी तक तो बताओ। इज क्लियर ना? ठीक है, फाइन। ओके, सो ये अभी आप होमवर्क में कर लेना क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला बताया था मैं, इसके द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 24x। देखिए आप लोग, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, सॉरी -2x स्क्वायर माइनस 24x। अच्छा, ड्रॉ द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू नो द जीरोस, तो मैंने देखो x कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, राइट? अब देखो गाइस, अब सबसे पहला यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टू फैक्टराइजिंग इट। मैं आपको बोला था ना, आई नीड द पॉलिनोमियल इन विच फॉर्म, x प्लस इसके इसके फैक्टर्स की फॉर्म में आई नीड इट। ओके, अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, तो आई होप यू नो द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है, if you have no idea about it, don't worry, I will explain you. Okay, अभी के लिए you just need to understand it, एक बार देख लो। okay, बाद में I will explain this. Okay, in the next lecture I'll explain it. Okay, because अभी next में हम पढ़ेंगे जब quadratic के factorization and all, तब I will do it. Okay, वैसे ये 9th में है तो काफी लोगों को आता होगा, आता है ना? सॉरी, देखो, so I can write -2 है ना, ऐसे करते हैं इसको, -2 को दो नंबर की फॉर्म में लिखना है जिनका प्रोडक्ट -24 आ जाए। That can be 6 and 4, -6x plus 4x minus 24, right? ऐसे लिख दिया। देखो ना, -6 plus 4 -2 आ रहा है, okay? And 6 -6 into 4 -24 भी आ रहा है। This is called the middle term splitting method, okay? यहाँ पे x common लोगे तो it would be x minus 6, and from here if you take 4 common, it would be again x minus 6, okay? Fine. So it would become x into x plus 4 into x minus 6. So now we got the zeros. What are the zeros? One is zero itself, देखो ना, जीरो पे जीरो हो रहा है। One is -4 and one is 6, right? तो ये हो गया आपका 3 zeros। And one more thing, if x is, you are putting y, sorry, हाँ, क्या करते थे फाइनल, बताना चलेगा बच्चों, क्या करते थे? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। अगला करते थे कि x को जीरो पुट करते थे एंड देखते थे y कितना आ रहा है। देखो, x को जीरो पुट करने पे इस बार y भी जीरो आ गया, मतलब ये ग्राफ पास कर रहा है 0,0 से इटसेल्फ। तो बस फिर ठीक है, यहां से ऊपर जाएगा, इससे पास करेगा, और फिर से आप फिर से पास कर जाएगा, राइट? नहीं सर, सर ये ऐसे भी तो नहीं, यहाँ से भी तो आ सकता था सर, ये बताओ सर, सर ये ग्राफ क्यों नहीं सर? अब आया मजा। क्यों आया मजा? क्योंकि सर जी, इस ग्राफ में क्या दिक्कत है? -4,0 से तो ये भी पास कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू 0,0 एज वेल, इट इज पासिंग थ्रू 6,0 एज वेल। फिर सर क्यों प्रॉब्लम है? आपने ये वो ऊपर वाला नीचे कौन सा वाला लेंगे सर? नहीं समझ में आया सर। ये बहुत सिंपल, देखो, टू मेक इट मोर क्लियर, एक वैल्यू और पुट कर लो x की, लेट्स x इक्वल्स टू 1 है। सर हाउ डू यू नो विच वन आई हैव टू पुट? यू कैन पुट एनी वन। ओके, x इक्वल टू, हम देखो वैल्यू कितनी आ रही, 1, 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 प्लस 4 5, एंड 1 इन 1 माइनस 6। ओके, -5 कितना आ रहा है बताओ? नेगेटिव आ रहा है ना? कोई कितना आ रहा है डजंट मैटर, नेगेटिव या पॉजिटिव, दैट्स व्हाट मैटर। नेगेटिव आ रहा है। अब देखो x1 कहाँ पे होगा? डेफिनेटली 0 से 6 के बीच में होता है ना, ये 0 है और ये 6 है, तो 1 कहीं बीच में होगा, यहीं कहीं पे होगा, कहीं भी हो सकता है इसके बीच में। अब देखो, अगर ऊपर वाला ग्राफ लेते हैं, तो ऊपर वाला ग्राफ तो क्या है? अबाउट द एक्स एक्सिस है, ये तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। बट हमें क्या चाहिए? व्हाट इज आवर नीड? आवर नीड इज नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ पे आता है? बिलो द एक्स एक्सिस इट्स नेगेटिव, राइट? सो नेगेटिव कौन सा आ रहा है? ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये वाला जो ग्राफ है, जो मैं अभी फिर से एक बार इसको थोड़ा सा और वो कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, दैट ग्राफ इज नेगेटिव। सो दैट्स गोना बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दैट केस। गॉट इट एवरीवन? इज देयर डाउट? क्लियर है सबको? मजा आया? डिफिकल्ट था? थोड़ा डिफिकल्ट लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो इट इज अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, इसको एक बार फिर अच्छे से देखो,
और ये रिकॉर्डिंग आपके पास है ही, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग विल गेट सेव्ड। सो रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखो एक बार फिर से एंड अंडरस्टैंड करो, स्लोली स्लोली पढ़ो, हो जाएगा क्लियर, राइट? और नहीं होगा तो Mr. Deepak Shringi, your mathematics faculty is always with you, right? Always eager to explain you, right? ठीक है, चलो, bye bye, take care, have a nice day ahead everyone, good night, bye bye, see you all, bye.